Good morning, students. Today's our topic is subject-verb agreement. So, with the help of the lot of examples and the golden basic rules of grammar, we are going to be discuss. The topic is subject-verb agreement. So, the basic rule of subject-verb agreement is a single verb is used for a singular subject, whereas a plural verb is used for a plural subject in a sentence. Singular verb has, was, is, and the plural verb is had, were, are. Example: the girl is playing. The girl is playing. The girl is singular subject and is the verb. तो सिंगल गर्ल खेल रही है. द गर्ल इज सिंगुलर सब्जेक्ट, द वर्ब इज सिंगुलर यूज्ड एंड अनदर एग्जांपल प्लूरल वर्ब द गर्ल्स आर प्लेइंग. द गर्ल्स ये क्या है? प्लूरल नाउन है या प्लूरल आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट प्लूरल है, इसलिए वर्ब यूज हुआ वो भी आपका क्या हुआ? प्लूरल वर्ब यूज हुआ. सिंगल गर्ल इज प्लेइंग सिंगुलर है, देन सिंगुलर वर्ब इज यूज. The girls are playing, plural है subject, plural verb is used. While using the correct subject verb agreement, a table shows the things you should keep in mind. First, subject present and the tense of I. Don't use S along with I. If is there you, don't use S. We, so don't use S. They refers to people or things or any noun for which they could substitute. They word may be used as a substitute for the noun in a sentence. Then don't use or don't add S along with verb. When you are using singular or plural verb, then don't use S in case of I, you, we and they. Next, he, she, it. He, she, it or any noun which he, she or it could substitute, then you should keep in mind the first thing is if the verb ends in any letter except S or X or O or CH or Y, add S with the verb. Add S with the verb. If the verb ends in any letter except मीन्स इन शब्दों को छोड़ करके अगर किसी और के शब्द के थ्रू, किसी और वर्ड्स के थ्रू आपकी वर्ब एंड हो रही है तो वहां पर आप एस लगाएंगे. अगर ऑलरेडी उसमें एस, एक्स, ओ, सी एच या वाई लगा है तो वहां पर वर्ब के साथ में एस नहीं लगाएंगे. सेकेंड, इफ द वर्ब ऑलरेडी एंड्स इन एस, कीप इन माइंड इफ द वर्ब ऑलरेडी एंड्स in S, add ES. add ES. अगर वर्ब जो है ऑलरेडी S के साथ कंप्लीट हो रही है तो आप उसके साथ में क्या लगा देंगे? ES. नेक्स्ट, if the verb ends with a constant plus Y, constant plus Y, you drop the Y and add IES. In place of Y, you use IES. मीन्स वावल नहीं, कांस्टेंट का लास्ट वर्ड आ रहा है वर्ब की क्लोजिंग पर, तो आप वहां पर वाई को हटा देंगे और क्या लगा देंगे? IES लगा देंगे वाई के. नेक्स्ट, इफ द वर्ब एंड्स विद ए वावल प्लस वाई, वर्ब एंड विद ए वावल प्लस वाई, सिंपली एड एस टू द एंड ऑफ द वर्ब. सिंपली एड S to the end of the verb. So this is the table you keep in mind while you are using the subject verb agreement. Now in the next part I am telling you 6 golden rule of grammar for the subject verb agreement. Okay. 6 golden rule of subject and verb agreement. The first one is if the subject is singular,
If the subject is singular, the verb must be singular too. If the subject is plural, the verb must be plural too. Two singular subjects connected by the word is and require a plural verb. If two singular subjects are connected by the word is a and b and, then you require to use a plural verb. Example is given: gold and silver. Gold and silver are precious metal. Means gold and silver, two singular nouns are connected by the word is a and b and. So you are using a plural verb. The plural verb is are. You are using the plural verb is are. Second, two or more singular subjects joined by or nor nor require singular verb. If the two or more singular subjects joined by or nor, then you are using a singular verb. Means singular subject connected by singular subject by or nor, then you are using a singular verb. Example is: neither food nor water was found there. Neither food nor water was found there means subject 1 is food, subject 2 is water, and both are connected by the word is nor. So you are using a singular verb here. Singular verb you are using here. If singular subject is connected with the plural subject, if the singular subject is connected with the plural subject by the word or nor, then what is used? Then plural verb is used. ध्यान दीजिए, if the singular subject is connected with the plural subject by the word or nor, then plural verb is used. Or if the singular subject connected by or nor with the another singular subject, then singular verb is used. Clear हो गया दोनों concept mind में? Example है neither the chairman nor the directors are present. Neither the chairman subject, first subject है chairman, second subject है directors, यानी कि second subject क्या है? Plural है directors. Director means number of persons are more than one. So subject, singular subject is connected with the plural subject by the word is nor. So you are using the plural verb. Plural verb is are. Neither the chairman nor the directors are present. Singular subject that is plural. Next, subjects joined by or nor are of different person. The verb agrees with the nearer. If different persons are connected by nor or, then it should be used by the nearer one. Subject 1 connected with the subject 2 by the word or nor, then verb agrees with the third person. Example लेंगे: neither you or he. Neither you or he is to be blamed. Neither you means second person or he is the third person, is to be blamed. So is आया आपका यहाँ पर neither is to be blamed by the third person. The third person is a singular. So you are using here the verb is singular. The fourth rule is says that either, neither, each, everyone. Either, neither, each, everyone, many, anyone, nobody, someone, no one must be followed by a singular verb. आपको ध्यान देना है कि जब भी सेंटेंस में इनमें से कोई भी शब्द आपको नजर आ जाता है तो आपको क्या ध्यान में रखना है कि सिंपली आपको वहां पर जाकर के सिंगुलर वर्ब को पुट कर देना है. यू शुड यूज द सिंगुलर वर्ब इन अ गिवन सेंटेंस. फॉलो बाय एग्जांपल: everyone of the boys loves to ride the car. everyone of the boys loves to ride the car. कि सभी में से each and every मीन्स हर बच्चे को कार चलाना अच्छा लगता है.
बात हो रही है देखने में प्लूरल, बट क्या है, एवरीवन ऑफ द बॉयज, कि सभी लड़कों में से प्रत्येक लड़के को, यानी कि उसका मीनिंग में जाते हैं तो सिंगुलर की बात करता है। तो एवरीवन आपको देखना ही नहीं, एवरीवन वर्ड यूज किया है आपके सेंटेंस में, तो आप सीधा क्या लगा देंगे, वहां पे सिंगुलर वर्ब्स लगा देंगे। और यहाँ देखिए लव्स क्यों आया, लव क्यों नहीं आया, LOVES है। देखिए LOVES है ना, LOVE लव होता है, लास्ट वर्ड जो वर्ब है वो ई के साथ यानी वावल के साथ एंड हो रहा है। तो आपको यहाँ रूल में बताया था ना कि जहां आपके इस तरफ रूल में टेबल के अंदर जहां वावल के साथ में आपकी वर्ब एंड हो रही है वहां सिंपली क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे। इसलिए ये क्या हो रही है, LOVES लव्स, लव हो रहा है, ई आ रहा है वावल, वावल के साथ वर्ड क्लोज हो रही है, इसलिए सिंपली वहां पे क्या लगा दिया आपने, एस लगा दिया। एवरीवन ऑफ द बॉयज लव्स टू राइड द कार। तो ये हमारा एग्जाम्पल हुआ जिसको हम कंप्लीट कर रहे हैं। Now, the rule number 5 is plural verb, plural form. Now, singular meaning means singular verb is used. Some nouns are plural in form, but singular in meaning. Some nouns are plural in form, but singular in meaning. Here, singular verb should be used. Example लेंगे, mathematics is the branch of study in every school. Here, mathematics is plural in form but singular in meaning, hence singular verb is used. The news is true. The news, it is plural noun in form but singular in meaning. News अपने आप में एक सिंगल न्यूज ही होती है, बट उसको लिखा जाता है NEWS न्यूज। तो इट शुड बी फॉर्म इन प्लूरल बट मीनिंग इन सिंगुलर, सो सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। रूल नंबर 6, सिंगुलर फॉर्म ऑफ नाउन बट मीनिंग इन प्लूरल फॉर्म, सो प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। सम नाउन्स आर सिंगुलर इन फॉर्म but plural in meaning, so verb may be used on the basis of meaning of this. Yani some nouns are singular in form but plural in meaning, hence plural verb is used. Example, 1 dozen apple cost 1000 rupees. The couple are going out this week. In this example, dozen and couple both seems to be as plural, singular in meaning but plural, singular it is form but plural in meaning, singular in form but plural in meaning. So here we are using verb on the basis of their meaning. Are is used because their meaning is plural but it should be singular in form. So these are the 6 golden rule of using the subject verb agreement. Keep in mind, everybody, anybody, somebody, nobody, everyone, anyone, someone, none. These subjects are singular and singular verb is used. Club, team, family, army. These words are singular even though they are talking about a group of people. देखने में लग रहा है कि club, team, family ये सब प्लूरल फॉर्म लग रहे हैं बट ये सिंगुलर हैं, इवन कि दे आर टॉकिंग अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल, दे आर सिंगुलर, सो सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। फॉर एग्जांपल, माय फैमिली इज विजिटिंग मी फॉर द हॉलीडेज, द फैमिली वर्ड इज यूज्ड, दिस इज सिंगुलर। पुलिस, पीपल, चिल्ड्रन, मैन, वुमेन, माइस, फीट आर इर्रेगुलर प्लूरल नाउन्स, सो प्लूरल वर्ब इज यूज्ड। Both of, a few, many, several are plural noun, so plural verb is used. So keep in mind